Hi, welcome to Kaphal Studio channel. Fortunately, I had the opportunity to interact with thousands of students appearing in the design exam for last 8 years now. और एक बात जो मैंने कंसिस्टेंटली नोटिस करी है वो ये है कि डिज़ाइन एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो माइंडसेट चाहिए होता है ना वो काफ़ी स्टूडेंट्स में मिसिंग है. So today in this video, I'll try and break down the steps to help you start your design preparation with confidence, and I will also give you a template to check that you are going in the right direction. So let's get started. So I have decided this preparation mindset into two major stages. Stage 1 is pre-preparation stage. कोई भी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि what career we are going to pursue ahead. उसके क्या prospects हैं और उसमें कैसे grow करते हैं. So in the pre-preparation stage, we need to go through 3 steps. Step 1 is understanding the job profile. To understand this, we have to look for 3 things. First is कि किसी भी stream के designers की job में hierarchy क्या होनी चाहिए. I mean, how they grow in their career. For example, if I want to become an interaction designer, I would first look for people who are working in the industry, try and connect with them and get to know कि एक interaction designer का growth curve क्या होता है and how much time it takes to reach a respectable position in the organization. Second, I would look for the skill set जो चाहिए होते हैं to excel in this industry. And third, I would ask the professionals how they spend their typical day on the job. मतलब सुबह से शाम तक काम क्या करना होता है. अगर मैं ये समझ पाया तभी तो मैं इस प्रोफेशन के साथ रिलेट कर पाऊंगा. The truth is, design exam is more about process. So most of the time you spend in the process. जब तक हमें process को enjoy करना नहीं आएगा तब तक हम इस industry में survive नहीं कर पाएंगे. Also, this acts as a motivation factor for you to prepare for the exam, honestly and rigorously. Step 2 in the pre-preparation stage would be understanding curriculum and assignments. आप किसी भी IIT के डिज़ाइन के किसी भी स्ट्रीम के पूरे करिकुलम को पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे. सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है. यहाँ तक कि करिकुलम में कौन से सब्जेक्ट और उन सब्जेक्ट्स में कौन सी बुक रेफर की जाएंगी ये तक भी अवेलेबल है. एंड इफ़ यू कैन टॉक टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज एंड गेट सम आइडिया कि असाइनमेंट्स कैसे दिए जाते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रीम से रिलेटेड माइंडसेट के बारे में भी पता चलेगा. और एक्चुअली अगर आप किसी सीनियर से पूछोगे तो दे विल टेल यू हाउ असाइनमेंट्स इन द कॉलेज specifically in the first year is related to what is asked in the design exams. The step 3 in the pre-preparation stage is the most important part if someone wants to pursue their career in the creative industry, and that is understanding yourself. Here I am not talking about the philosophy of understanding yourself, but a simple question. If I ask you how would you like to spend your typical day? Would you like to spend your day sitting in front of the laptop, or would you like to spend your day working with the materials, getting your hand dirty and create some 3D object or product for you? अगर आपको ये पता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी स्ट्रीम और इंटरेस्ट को पता करना. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू नो दिस आंसर ऑन द डे 1 ऑफ द प्रिपरेशन. यू कैन एक्सप्लोर दिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑल्सो. सब चलता है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द प्री प्रिपरेशन स्टेज. नोइंग दीज आंसर्स प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर अहेड. द सेकंड स्टेज इज द प्रिपरेशन स्टेज. लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप 0 ऑफ द प्रिपरेशन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न. Now, I have seen students preparing for the exam without being aware of the type of questions asked in CEED and how it is different from, let's say, NID or NIFT. यहाँ पर मैं एग्जाम पैटर्न डिस्कस नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में क्योंकि ये सब वेबसाइट पर अवेलेबल है. एंड ऑल्सो वी हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन गो एंड रीड फ्रॉम देयर ऑल्सो. Also, I have created a detailed video on preparation already, and so you can go and watch that video as well. But it is important, that you know the marking schemes, question pattern, types of question, and when the exam is to be conducted, at least इतना तो पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Once you know this, you are actually ready for the preparation. So let's start with this step 1 of the preparation, and that is working on your drawing skills. अब सच्चाई ये है कि अगर आपको इंडिया में डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो बिना ड्राइंग स्किल्स के तो बहुत ही मुश्किल है. आप उसका कुछ नहीं कर सकते. एग्जाम का कुछ पैटर्न ही ऐसा है. विथ गुड हैंडलिंग स्किल्स यू आर डायरेक्टली अहेड ऑफ मेनी इन द रेस. ऑफकोर्स आइडियाज़ आर इंपॉर्टेंट, बट आइडिया से सिर्फ क्या होगा अगर आप उसको पेपर पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे. इट इज़ जस्ट दिस शीट ऑफ पेपर दैट इज़ द लिंक बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर. For your better understanding, here are some of the examples of some of the top rankers to show you what is the level actually required in the exam. So these are basically the assignments completed in 10 minutes by those students. तो अगर देखा जाए तो लेवल चाहिए, ऐसे नहीं है, बट कोई ऐसा आर्टिस्ट वाला लेवल भी नहीं चाहिए होता है कि नहीं. एंड लाइक आई सेड, दिस इज अ स्किल सो यू कैन मास्टर इट विद प्रैक्टिस. बस एक बात का ध्यान रखना जरूरी है दैट इफ यू आर नॉट गुड एट दिस पार्ट यू आर आउट ऑफ द रेस ऑलरेडी. Step 2 in the preparation is working on ideas. Ideas are important. This shows how you think and how you come up with the solution. To work on the ideas, you can try to read articles, books, or for example, I recently created a video on Thinker Toys, which I think is a good book to to flex your creative muscles.
You can observe methods how other professionals are creating their work. You can find infinite documentaries and YouTube videos on this. The next step is practice solving idea-based questions from previous year or solve some riddles. Try solving some riddles from good puzzle designers like Martin Gardner, Ivan Maskovich. I'll discuss about this in detail when I discuss about why puzzles and riddles are asked in the design exam, because I think that discussion I can keep for some other day in some other video. Let's talk about the last step in the preparation. अब देखो, हमें ये तो पता है कि डिज़ाइन एग्जाम में कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, तो प्रिपरेशन को ट्रैक करना इतना आसान तो है नहीं. इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर आप मिलोगे जिन्होंने एग्जाम में अटेम्प्ट किया है, दे विल टेल यू कि उनको सब आता था एग्जाम में, बट कहीं ना कहीं उनको पैनिक अटैक आ गया एग्जाम में और उनको कवर नहीं कर पाए क्वेश्चंस को. इस सिचुएशन को पार करने के लिए लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन से गुजरना होता है, विच आई फील, जिसको मैं बुलाता हूँ मेंटल प्रिपरेशन. आई बिलीव दैट द एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट्स इन द हेड एंड नॉट इन द पेपर. टू अचीव दिस आई वुड रिकमेंड 3 टास्क्स. फर्स्ट इज अडॉप्टिंग द एग्जामिनर माइंडसेट. जब हम टेस्ट या एग्जाम दे रहे होते हैं ना, एक्चुअली वी आर पैसिवली थिंकिंग लाइक अ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से. बट इफ यू आस्क योरसेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाई दिस क्वेश्चन वाज गिवन टू मी, व्हाट एग्जैक्टली दे आर टेस्टिंग थ्रू दिस क्वेश्चन, and if you can dive deeply into this thought process, you will notice that the question is just testing your presence of mind. हम लोग इस एक्सरसाइज को C2D प्रोग्राम में करते हैं, where we call it flipped classroom, and many students say that this has been an eye-opening exercise for them. The second task that you can do is getting rid of the imposter syndrome. इस पूरे प्रोसेस में जो एक बात सबको फील होती है, चाहे आप रैंक 1 से पूछ लें, इस साल वाले, पिछले साल या उससे पिछले साल, कि पूरे प्रिपरेशन में मुझे लग रहा था कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं ही हूँ और बाकी सब बहुत होशियार हैं, उन सबको सब कुछ आता है और मुझे ही बस कुछ नहीं आता. इससे बाहर आने का तरीका है व्हेन यू डोंट थिंक अबाउट अदर्स एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स. और ये तभी होगा व्हेन वी आर सेल्फ मोटिवेटेड. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड स्टेप और थर्ड टास्क दैट यू शुड डू, दैट स्टे मोटिवेटेड इन दिस जर्नी, बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन. टू अचीव दिस आई वुड सजेस्ट टॉक टू अदर सीरियस एस्पिरेंट्स एंड इफ़ यू कैन विजिट कैंपस इफ पॉसिबल, क्योंकि ये एक ट्रिप ना मोटिवेशन का बैंक हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है. गो एंड ऑब्जर्व द लाइफ बियॉन्ड दोज गेट्स एंड इट विल बी लाइक सबसे बड़ा मोटिवेशन जो आपको अपनी लाइफ में अब तक मिला होगा. इफ पॉसिबल टॉक टू द स्टूडेंट्स हु क्रैक द एग्जाम एंड यू विल नोटिस कि आपको जैसे प्रॉब्लम्स हैं वो भी सेम प्रॉब्लम से गुजरे अपनी लाइफ में. और इसके बाद भी अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो आप हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं. एंड दैट्स इट फॉर द प्रिपरेशन स्टेज. अब बात करते हैं कि इस पूरे प्रिपरेशन स्टेज में स्टूडेंट्स जनरली किस बात पे फोकस करते हैं. वो फोकस करते हैं ड्राइंग और सॉल्विंग क्वेश्चंस. बट इफ यू टॉक टू द स्टूडेंट्स हु हैव क्रैक्ड द एग्जाम, यू विल नोटिस दैट दीज वर्ड्स, फ्रेजेस और कीवर्ड्स कहीं ना कहीं उनकी बातों में ज़रूर झलकेगा. मेरा फोकस भी कनेक्ट टू डिज़ाइन में प्रिपरेशन के स्टेप 2 और स्टेप 3 पे ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टेप 1 दैट इज ड्राइंग स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड विद सेल्फ डिसिप्लिन. बट येस, वी प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक टू स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव. एक और बात, you can find this Notion template in the form of checklist, everything that I discussed in this video, so that you can track your preparation and start with the right mindset. I'm sure this video will help you in some way in your preparation journey. और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ यार. और थोड़ा टाइम निकाल के हमारे C2D प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ लेना. We are trying to create something beyond design exams here in this Connect to Design program. The enrollment for the Connect to Design this year are now open. So see you in the next video. Thanks.